નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના વિડીયોની અંદર જે હિન્દીનું પેપર છે ગાલાનું ગાલા અસાઇનમેન્ટનો હિન્દી પેપર 2 હતો એનો એ વિભાગ જોયો હતો. આજે આપણે એનો બી અને સી બંને વિભાગ જોવાના છે, એટલે કે પદ્ય વિભાગ અને વ્યાકરણ વિભાગ એ બંને વિભાગ આપણે જોવાના છે. આ ભાગ આપણે આગળ જોઈ ગયા હતા. ત્યાર પછીનો આપણે વિભાગ જે પદ્ય વિભાગ આવે એ અહીંયા જોવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો. જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તે સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, અન્ય મિત્રોને પણ કરાવજો, જેથી આવા જ વિડીયો મળતા રહે. તો હવે આપણે વિભાગ બી સ્ટાર્ટ કરીએ. પદ્ય વિભાગ બી, જેની અંદર કવિતાના પ્રશ્નો બધા પૂછાય છે. આગળ આપણે ગદ્ય વિભાગ જોયો હતો, જેમાં પાઠના પ્રશ્ન જવાબની વાત કરી હતી. तो સૌથી પહેલા निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. 3 मार्क में 15मो. एक सखी दूसरी सखी से कहती है उसे क्या कहते हैं? तो ये मुकरी. खास याद रखજો. આ એક સખી મતલબ કે એક સહેલી બીજી સહેલીને જે વાત કરે એ વાતને અહીંયા મુકરી કહેવાય છે. એ ઉખાણા સ્વરૂપની હોય એટલા માટે. 16મો प्रश्न है, क्या लगने पर तोता फल कुतरता है? तो भूख. 17, भौरों की गुनगुनाहट में किसके मधुर स्वर सुनाई देते हैं? तो शहनाई. कश्मीर जे આપણું કાવ્ય છે એમાંથી લીધેલું છે. ભૌરો એટલે ભમરા. ભમરાનો જે ગણગણાટ છે એમાં શહેનાઈનો અવાજ આવતો હોય એવું એમને લાગે છે. સહી વિકલ્પ ચुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. 3 मार्क. शिकारी का बाण खाली जग्या था. मतलब શિકારીનું બાણ કેવું હતું? મતલબ કે વિષભૂજા, મતલબ કે ઝેરથી ખરડાયેલું, ઝેરથી ભરાયેલું હતું. કવિને નાવો કી નગરી ખાલી જગ્યા કો કહા હૈ? તો એમાં આવશે કશ્મીર. 20, गोपी गले में खाली जग्या की माला पहनना चाहती है? तो गुंजे. ત્યાર પછી निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. આની પહેલા પણ આપણે વાત કરી હતી કે જ્યારે આવું પૂછાય ત્યારે આખું વાક્ય જ લખવાનું હોય છે. અહીંયા જે જવાબ છે એ જ મેં તમને આપેલો છે, પણ પરીક્ષાની અંદર વાક્ય આખું લખવાનું હોય છે. आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आता है तो वे अपनी पोल खुल न जाए इसलिए मौन रहते हैं. 22मु, जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में नव चेतना आ सकती है. 23मु, हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई थी जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित है. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. भारत का अस्तित्व कब से है? तो એનો જવાબ છે भारत का अस्तित्व तब से है जब से नव सृजन के सपने जागे थे. तो भारत का अस्तित्व तब से है जब नव सृजन के स्वप्न जागे थे. 25मो, लोमड़ी क्या देख रही थी? लोमड़ी क्या देख रही थी? એનો જવાબ છે लोमड़ी खेत में कुत्ते को खरहे का पीछा करते हुए तथा कुत्ते का दौड़ में खरहे से हार जाना देख रही थी. ત્યાર પછી निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. 2 मार्क. એમાં 26મો પ્રશ્न છે, मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है? एनो जवाब है मीराबाई को अपने सदगुरु पर बहुत श्रद्धा है. वे उन्हें ही भगवत भक्ति प्राप्त कराने का आधार मानती है. वे सत्य की उस नाव पर बैठकर भवसागर पार करना चाहती है जिसके खेवनहार मतलब के खेवटिया એટલે કે એને ચલાવનાર
उनके सदगुरु होंगे। એના અથવામાં પ્રશ્ન હતો, भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा प्रभु से निकटता दर्शाता है। तो એનો આપણે જવાબ જોઈ લઈએ। भक्त अपने आप को प्रभु से निकटता निम्न उदाहरणों से दर्शाता है, जैसे कि चंदन पानी, घन मोर, दीपक बाती, मोती धागा तथा स्वामी दास। आवा उदाहरणों द्वारा ई भगवाननी नजीक छे एवुं बतावे छे। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। 3 मार्कनो प्रश्न होय छे। प्रश्न 27, कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है। कुत्ते की सीख जे काव्य छे एनाथी आपणे शुं बोध मळे छे ए अहींया कहेवानुं छे। जवाब छे, इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता एक खरहे का पीछा करता है और खरहा अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कंटीली झाड़ी में छिप जाता है और उसकी जान बच जाती है। इस काव्य से यह बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, कमजोर हो या शक्तिशाली, जब उसके प्राणों पर बन आती है तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। तो आ આપણને એમાં બોધ મળે છે। ત્યાર પછી કવિ बालकृष्ण शर्मा नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं। तो कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन भारत के लिए कहते हैं कि हमारा देश बहुत ही प्राचीन है। यह आदि अनादि એટલે કે घણા બધા पुराना समय थी काल से हमारा जन्म स्थल है। 42 करोड़ देशवासियों को, कारण के ए समये 42 करोड़ ની વસ્તી હતી એટલા માટે કીધેલું છે। 42 करोड़ देशवासियों को इस बात का गर्व है। उनकी गर्जना से दुश्मन कांप जाते हैं। उनका सामना कोई नहीं कर सकता। भारत वर्ष महान देश है। ત્યારે ભારતને ભારત વર્ષ કહેવામાં આવતું હતું જૂના સમયની અંદર, એટલા માટે। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। 2 मार्क। 2 मांथी 1 આપણે હોય છે, हाथ में हो गोमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। आ साधु उपदेश जे पाठ छे एमांथी લીધેલો છે। साधोपदेश जे साधु उपदेश आपे छे, ढोंगी साधुनी वात छे अहींया। तो जवाब छे, यह पंक्तियां ढोंगी साधुओं के लिए कही गई है। ढोंगी साधु अपने हाथ में हमेशा गोमुखी रखकर माला फिरते रहते हैं, क्योंकि लोगों को लगे कि वे प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। ऐसे साधु ऊपर से नम्र होने का ढोंग करते हैं, परंतु अंदर से छल कपट चलता रहता है। ત્યાર પછી બીજી पंक्ति छे, हम श्रम का वंदन करते हैं, मेघा मतलब बुद्धि, मेघा का गायन करते हैं। हम मानव का निर्माण अमर लख कर सुख गर्जन करते हैं। जीवन अभिमान जागो और जगावो। तो आ पंक्तिओनो अर्थ આપણે જોઈ લઈએ। इस पंक्तियों के द्वारा कवि ने कहा है कि हम परिश्रम की वंदना करते हैं, यानी कि श्रमिक और किसान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी तरह बुद्धि का भी सम्मान करते हैं और बौद्धिक वर्ग भी अत्यंत उपयोगी है। हम सब मनुष्य के सुख की कामना करते हैं। कामना એટલે ઈચ્છા। हे जनशक्ति, हमको तुम पर गर्व है, तुम भी जागो और दूसरों को भी जगाओ। तो અહીંયા આપણો પદ્ય વિભાગ છે એ પૂર્ણ થાય છે। હવે આપણે વ્યાકરણ વિભાગ જોવાનો છે। निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा काम करने से अच्छा और बुरा काम करने से बुरा फल मिलता है। जो जैसा करता है वही उसको फल मिलता है, उस प्रकार का। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तप करने के लिए वन, इन्हें कहेवाय छे तपोवन। निम्नलिखित संधि को छोड़िए। सर्वोच्च
સર્વ વત્તા ઉચ્ચ, સર્વોચ્ચ, સર્વ ઉચ્ચ. निम्नलिखित संधि को मिलाइए. मंत्र प्लस उच्चारण, मंत्रोच्चारण, मंत्रोच्चारण. ત્યાર પછી निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. हाथ पैर फूल जाना मतलब के घबरा जाना, डर जाना. वाक्य છે जंगल में शेर को देखकर रमेश के हाथ पैर फूल गए. निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए. सीमित, असीमित अथवा असीम पण તમે લખી શકો છો. અસીમિત અથવા અસીમ. 35મો છે તપન. એનો વિરોધી શબ્દ થાય ઠંડક. તપન એટલે જે ગરમ હોય તે, ઠંડક એટલે એનું ઉલટું ठंडक. निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए. दमक मतलब के चमक, दमक मतलब चमक, અને તરંગ મતલબ લહર, જેને આપણે લહેર મોજા કહીએ છીએ તે, અને દમક એટલે ચમક. ત્યાર પછી છે निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए. પહેલું છે પ્રક્ષેપ 38મું, એનું થાય પ્રક્ષેપણ. 39 છે પરખના, એનો જવાબ આવે પરખ. બરાબર યાદ રાખજો, પ્રક્ષેપણ અને પરખ. विशेषण लिखिए. सम्मोहन तो सम्मोहनीय, जीवन तो जीवित. निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए. नृत्य तो नृत्यकार, हंसी तो हंसोड़. आ खास याद रखजो, हंसी तो हंसोड़, ई खास याद रखजो. निम्नलिखित समास को पहचानिए. 44મું यथाशक्ति. यथा એટલે જેવી, શક્તિ. અવયવી ભાવ સમાસ. અનગિનત એ પણ અવયવી ભાવ સમાસ છે. તો અહીંયા આપણા બી અને સી બંને વિભાગ પૂરો થાય છે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ડી વિભાગ જોશું. મિત્રો લાઈક અને શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો, જેથી મને પ્રોત્સાહન મળે અને આવા જ વિડીયો બનાવતો રહું. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કલરફુલ આપણે સાઇટ ઉપર પણ આ મૂકેલું છે. યાદ રાખજો, આપણે જે સાઇટ છે બાલાજી ક્લાસીસ jamnagar.blogspot.com, અથવા તો આ વિડીયોનું જે ડિસ્ક્રિપ્શન છે એમાં સૌથી છેલ્લી જે લિંક છે એના ઉપર તમે જશો એટલે તમને પેપર મળી જશે. 2-3 વિભાગ એ બી સી એ 3 વિભાગ મુકાઈ ગયા છે. ડી વિભાગ તૈયાર થશે એટલે એ પણ મૂકી દઈશ અને એનો પણ વિડીયો હું બનાવી લઈશ. અને આના પહેલાનું જે પેપર હતું એ પણ સાઇટ ઉપર છે જ, તો તમે ગમે ત્યારે એની મુલાકાત લઈ શકશો, ગમે ત્યારે વાંચી શકશો. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પીડીએફ માંગે છે, પણ હું પીડીએફ નથી બનાવતો, ડાયરેક્ટ સાઇટ ઉપર લખું છું, એટલે પીડીએફ ન બને. માટે તમે સાઇટ ઉપર ગમે ત્યારે જોઈ શકશો. કદાચ પીડીએફ તો કોઈની પાસે હોય તો ડિલીટ થઈ જાય, પણ સાઇટ ઉપર કાયમ માટે રહેશે, એટલે તમે પરીક્ષા સમયે પણ વાંચી શકશો. તો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ડી વિભાગ સાથે ફરીથી મળશું.